Good evening, students. In previous video, we have started a new chapter of pollution. Firstly, we know the pollution means it is undesirable physical and chemical disbalance of nature, and in our surrounding is called pollutions. And we have also seen the list of pollutants, which type of substance are generally create pollutions. And we have also discussed the list of pollution. There is this air pollutions, water pollution, soil pollution, thermal pollutions, and noise pollution also. Okay, then in previous video we have completed the two most important topic, and that is air pollution and water pollution. We have also studied how the air pollution causes problems and how it is spreaded and how can we control them. In water we have also studied what is water pollutions, how it is controlled, what is the impact role they playing in our human beings and animals also. So here we are going to discuss the new topic of today class, and that is soil pollution. Soil pollution means something there is a undesirable changes in soil by contaminating different types of items, that is causes soil pollutions. Okay, soil pollutions का मतलब होता है किसी भी चीज का जो chemicals या fertilizers या किसी प्रकार का substance when we add it to a soil to make it more fertile, and the excess amount is that causes soil pollution. And there is a several list of pollutions that creates by soil. And suppose firstly we have to clear the exact meaning of soil pollutions. Soil pollution, it is the alternation in a soil caused by removal or addition of substance which decreases its productivity and quality of plants and groundwater is called soil pollutions. Soil pollutions का मतलब होता है when we going to add or remove something and that substance which are not a beneficial for soil, that time that pollutants causes the decrease in productivity and quality of plants and groundwater. उस समय पे वो जो भी सब्सटेंस जो पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म्स में जो पाए जाते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं जनरली आपके सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उसकी जो भी उपजाऊपन है, जो भी प्रोडक्शन देने वाला है, देन द क्वालिटी द नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है, एंड द थर्ड इज जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारे ग्राउंड वाटर्स हैं, they are mostly affected by that type of pollutions. Okay, so here we have seen that soil pollution is the alternation way by which the different types of pollutions are generally created in our environment, and day to day these pollutions are generally increasing. ये pollution बढ़ते ही जा रहा है, it is not going to be less down, कम तो हो नहीं रहा है. Why? Because pollutions are generally created by the physical and chemical nature of human beings and many more. Okay, we will also discuss one by one. So firstly we have to clear that soil pollution is a major and important task we have to clear, because we are living on the land and land is just a purify by which they provide a better and suitable environment to most of the small insects also. If the land is not a freely, and if the land is totally freely for the environment, it means the human beings and animals will survive easily. If that is gets polluted, it means all the things, whether human beings or animals or most of the small insects, will feel प्रॉब्लम्स. ओके, अगर इन्वायरमेंट हमारा या भी जो भी हमारे लैंड से संबंधित जो भी हैं, अगर वो साफ सुथरे होंगे, इट मीन्स इट क्रिएट बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. अगर वो नहीं होंगे, इट मीन्स इफ दे आर कंटामिनेटेड, इट मीन्स they are going to create a problem for anyone. ठीक है, वो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे. So here we have to discuss the soil pollutions. Generally we have started soil pollution. Soil pollution में हमने देखा कि किसी भी चीज के सबस्टेंस में जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, that time the excess amount of that material causes the loss of productivity, causes loss of quality of plants and groundwater also, is called soil pollution. ठीक है, soil pollution in a second way we also know that the land pollutions. Okay, soil pollutions को second way में हम land pollutions के नाम से भी जानते हैं, and it is the most important. Why? Because the plants are totally attached with the soil, क्योंकि हमारे जो plants है वो totally soil से attached है, and if the quality and productivity are not well, it means the plant will also not growing well, and it creates problem in the formation of oxygen. अगर soil अच्छा नहीं होगा, plants भी well adapted नहीं होंगे, और plants जब well adapted नहीं होंगे, they do not release the oxygen in our environment, and human beings and most of the animals will rapidly die. वो मरने लगेंगे. क्यों? क्योंकि because we will feel the lack of oxygen जो कि पौधे रिलीज करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा. Why? Because lands generally gets polluted and lose
द फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, इस कारण से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो टाइम टू टाइम कम होते जाएगी और जो पौधे हैं वो फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, आधे दूर तक उनकी स्टॉप जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी. ओके, दैट इज द मेन पॉइंट. एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ soil pollution. In here we have to discuss which type of sources are generally create pollutions of soil. Soil में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो pollutions फैलाती है. So firstly we have to discuss the pesticides. We know that several types of pesticides are in founding in the market. बहुत सारी चीजें हमको generally markets में मिल जाती हैं. Pesticides including different types of fungicides, biocides, DDT and all of the certain types of powdery substance which are generally spread in the field to destroy the weeds and the small insect वगैरह, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं. And the pesticide, the higher concentration of pesticides in the agriculture that creates problem in land pollution. अगर ज्यादा मात्रा में अगर उसका जो भी powdery substance का अगर छिड़काव होता है, that causes the land pollution and land pollution is a serious task in the world also. ये बहुत important है. Next point is that washing from solid waste. Washing from solid waste का मतलब होता है several types of materials we have to generally washed through from our domestic waste and we have to seen in the industrial waste also. ये सब solid waste के फॉर्म में washed होते हैं, इनको डायरेक्ट थ्रूली washed करके बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है and that substance are generally mixed with the soil and it creates pollutions. ये solid waste जो होते हैं घर के, जो भी डोमेस्टिक हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए या बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जितने भी वेस्ट हो गए, इनको रफली वो करके इनको बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है. रिलीज करने का जो तरीका होता है, इट ऑल्सो क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशंस, लैंड पॉल्यूशंस और भी बहुत सारे पॉल्यूशंस को कारण. सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आपका देखोगे तो सॉइल पॉल्यूशन को, इवन जो सॉइल है, सॉइल इज आल्सो रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि मिट्टी से होते हुए जो भी सॉलिड वेस्ट है वो आगे चलकर वाटर में इन्वॉल्व होंगे एंड देन वाटर आल्सो गेट कंटामिनेटेड एंड इट कॉजेस वाटर पॉल्यूशंस. ओके, सो हियर washing from solid waste, I already explained that. Now next topic is that fertilizers. Fertilizers generally we use in the soil to productivity of different types of crops in a very slow time of interval. बहुत ही कम समय में हमको अगर ज़्यादा productivity की चाहिए, ज़रूरत है, तो we use generally fertilizers and manures. Okay, there is a too much difference between fertilizers and manures, but sometimes some fertilizers is more dangerous for soil. कुछ ऐसे fertilizers होते हैं जो कि बहुत dangerous होते हैं and due to their higher concentration, okay, due to their higher concentration in the soil, it also get contaminated in the soil and that leads to soil pollutions. ज़्यादा मात्रा में अगर fertilizers release होते हैं, okay, for the productions of higher yields plants, that causes land pollution. Land pollution का सबसे important कारण भी ये होता है, ठीक है. Now next we are going to discuss that. Next is that solid waste की अगर हम बात करते हैं, solid waste is also a very playing impact role to enhance the soil pollution. अगर हम soil pollution की बात करते हैं तो soil pollution में भी ऐसे बहुत सारे solid waste products हैं जो हमारे pollutions को increase करते हैं day by day. इससे पहले हमने देखा कि sources of soil pollution में भी have discussed pesticide, washing from solid waste and fertilizers. 3 types are given in the sources of soil pollution. These are the most, ये बहुत मोस्ट है. इनके अलावा भी देयर इज समथिंग और वी हैव लेफ्ट टुडे जो हम आज छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, यू ऑल हैव टू फोकस दिस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट मींस क्या होता है, कोई भी फॉर्म जब वो सॉलिड फॉर्म में रिलीज होते हैं कहीं से भी, एंड दैट इज ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट. जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. मोस्ट एंड मेजर इट इज 5 टाइम्स. ओके, अगर हम देखते हैं तो जनरली सॉलिड वेस्ट में सबसे पहला आता है म्युनिसिपल वेस्ट. म्युनिसिपल पार्टी जो होते हैं जनरली इट वर्क्स ऑन द सैनिटरी ऑफिस, ठीक है. सैनिटरी ऑफिस में इनका काम होता है. जनरली दे प्रिपेयर देयर वर्क टोटली इन आवर सराउंडिंग एरिया, दे क्लीन दैट एंड दे पिक अप दैट मटेरियल एंड थ्रो इट अवे फ्रॉम द सिटी. ओके, क्या करते हैं, किसी एक खास जगह पे काम होती है इनकी, उस जगह को कैरी आउट करते हैं, जो भी साफ सफाई, एंड उसके बाद उसको लोड करने के बाद किसी शहर से दूर जहाँ पे कोई पॉपुलेशंस नहीं है उस जगह पे उसको डग आउट या लैंडफिल्स में उसको डाल दिया जाता है. वाई, ताकि वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट ना करे अपने एनवायरमेंट में. दैट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल वेस्ट. लेकिन आज के डेट में बहुत सारे जो म्युनिसिपल वेस्ट हैं वो जनरली क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को लोड होती है, लोड होने के बाद जनरली वी थ्रो देम इन अ लैंडफिल्स या सॉइल ऑन ओपनली मैनर. हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसको खुले में फेंक देते हैं. लेकिन जब वो काफी दिनों तक, व्हेन इट इज स्टेबल इन द सॉइल, इट कॉजेस सॉइल पॉल्यूशन. काफी दिनों तक अगर वो उसमें मिक्स रहेगा
तो वो वहां पे सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डोमेस्टिक वेस्ट. वी ऑल आर फेमिलियर विद द डोमेस्टिक वेस्ट बिकॉज in several day we uses different types of items and we generally throw them in a soil. Okay, so that time that thing decomposes with soil and it also creates problem. ठीक है, बहुत सारी चीजें हम आए दिन डेली यूज में यूज करते हैं एंड आफ्टर दैट आफ्टर द यूजिंग we have to throw in a soil. हम soil में फेंक देते हैं मिट्टी में and they decompose by the action of microbes and that time when the things are generally mixed with the soil it also creates problem and that leads to soil pollution. ये भी soil pollution का सबसे important कारण है. And next, electronic waste and electronic media. We know that and we are living in a 21st century and we know very well electronic media. There is a several types of electronic items we are using in our homes. We use TV, mobiles, refrigerator. But most important thing, if that type of items are generally destroyed, we generally throw it in the soil. ओके, जब भी वो सारी चीजें खराब होती है वी हैव टू थ्रो इन अ सॉइल. किसी भी जगह पे, खुले जगह पे हम फेंक देते हैं एंड दैट डिकम्पोजेस एंड क्रिएट्स आल्सो सॉइल पॉल्यूशन. जब वो डिकम्पोज होगा, जब वो सॉइल के साथ मिक्स होगा एंड दैट आल्सो लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ावा देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, hospital waste, most important and most dangerous thing because doctors and nurses and many more hospitality are generally using different types of medicine, different types of syringes, different types of vaccines and they generally after the manufacturing date expires they throw in a soil and that time the most of the animals are generally eat them or most of the animals are generally press them. That time they also affected, humans are also affected and soil is also affected by that decisions. Okay, so hospital waste plays an important role to produce and improve soil pollution which is most dangerous thing. hospital का जो waste होता है वो बहुत harmless होता है फॉर सॉइल पॉल्यूशन के लिए क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो जनरली हॉस्पिटल से रिलीज करके सॉइल पॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है. जब वो डिसॉल्व होते हैं एंड आफ्टर द डिसॉल्विंग द कैपेसिटी आर जनरली इंक्रीज एंड दे लॉसेस द प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड ग्राउंड वाटर. दैट टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इनका सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ाने में. दैट इज द हॉस्पिटल वेस्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू study the industrial waste. Okay, industrial waste generally we are living and there is a several types of factories are there and that time the factories creates pollutions, air pollutions also, water pollutions also and it also causes soil pollutions. In which type of it creates soil pollution? Generally the different types of garbage, different types of raw material they generally throw in our open environment and that time that material decompose with the soils and after the decompositions the microbes and bacteria, virus, different types of organisms are generally created and that time it also creates the soil pollutions. Okay, so here we have discussed the important role of which type of systems are generally polluting the soil pollutions. Now we are going to see the effects of soil pollutions. अब हम effects of soil pollutions के बारे में देखते हैं. So firstly we have to discuss the which type of effect does soil pollutions play. So I have mentioned here 2 points only and that is it reduce the quality of soil. Quality of soil means it reduce the quality of soils means whenever you will play an important role and if you are going to put a seed in the soil that time the seed will not burst out and the flowers will not germinate. Why? Because their productivity is already lost. Okay, due to soil pollution. जब आप कभी जाएंगे फसल उगाने के लिए when you will bow different types of seeds that times the seed will not ruptures and the seedlings will not create. उस टाइम पे seedlings जो है वो तैयार नहीं होगी and it also creates a quality of soil. ये क्या कारण होता है? क्योंकि ये soil के कारण इनकी जो quality होती है, productivity होती है soil की वो खत्म हो जाती है. Second point is that rapid death of small insect. We know that there is soil is the home of different types of small insect. बहुत सारे insect रहते हैं. Example की बात करते हैं हम लोग different types of mice. Okay, and spiders and earthworm. बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो होते हैं वो जनरली लिव्स इन द सॉइल, मिट्टी में रहते हैं. बट ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन द रैपिड डेथ ऑफ इन स्मॉल इंसेक्ट, जो भी स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनकी रैपिड डेथ होने लगती है क्योंकि मिट्टी पॉल्यूट होता है एंड पॉल्यूशंस क्रिएट डेंजरस हजार्डस फॉर द लिविंग बींग्स. जो भी जिंदा लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है इवन इन अ प्लांट्स ऑल्सो, और ये प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाता है.
Okay, so this is all about the effects of soil pollution. So last and important topic is that we have to focus how to control soil pollution. Soil pollution को कैसे कम करें? And that is the first control of solid waste is first recovery and recycling. जो भी चीज we are going to throw, जो भी चीज हम फेंकने जा रहे हैं, firstly we have to recover and we have to recycle. इट मीन्स द सब्सटेंस इज नॉट गेट पॉल्यूटेड, यानी कि वो जो चीज है वो हमारा पॉल्यूट नहीं करेगा और हमारी चीजें जो है रिकवरी भी हो जाएगी और हम उसका रिसाइकिल भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट बर्निंग. वी हैव टू बर्न सम मटेरियल टू अवॉइड the quantity, but burning is not an exact solution. It also create air pollution. So firstly we have to put them in a different zone where the pollution cannot be transmitted. Okay, so burning is not an exact solution. Second point is that construction material, we have to use the construction material in a different manner and we have to use a very little amount by which we cannot throw in a openly ground. If the work is over, then we have to put in a recovery and recycling manner, and if the work and our home is totally prepared, it means there is a no use of construction material. So generally if the completion of work, generally most of the carpenters and most of the many more masons throw the cement and bricks here and there, and it also creates problems. So that time they have to collect and take it from their home also. Okay, now next most important, sanitary landfills. Sanitary landfills is the most important and beneficial steps. Sanitary landfills का मतलब होता है when the garbage is totally stored, they have to put them in a landfills. काफी ज्यादा जो landfills होते हैं गड्ढे, उनको उसमें पैक कर देना, और पैक करने के बाद जनरली that decomposes and it does not creates any problems. ठीक है, वो ज्यादा problems create नहीं करता है. So this is all about the control of solid waste. Now we are going to discuss the most important, and that is radioactive dust. Radioactive dust is generally not a familiar with all that, but it also a dangerous thing comparison than this is also a dangerous thing. Okay, radioactive dust means a waste which releases radioactive from various elements. Radioactive waste का मतलब होता है, we know the radioactive, we have studied in physics and chemistry also. Radioactive waste means emission of alpha particles and gamma particles rays. When the higher concentration of alpha and gamma particles, it creates pollution in our environment. This is called radioactive waste, and it causes pollution in the way of radiations. Radiations के वे में हमारे environment को pollute करते हैं. That is called radioactive waste. Okay, and it also causes the serious problem, skin cancer and skin diseases in the human beings and animals also. Okay, write down the important point, and we have to discuss the different types and causes of radioactive waste. Okay, how the radioactive waste can done important role to produce that type of waste. First, it developed due to accidental. Suppose if there is a nuclear thermal power plant and accidentally it burst out, it means all the emissions of gammas and alpha rays are generally emitting from outside the world and outside the environment, and it also creates problems. Okay, so accidental it can be done. सेकेंड, लीकेज. कभी कभी इनमें लीकेज हो जाते हैं. लीकेज मीन्स यू ऑल नो वेरी वेल, लीकेज हो जाते हैं. एंड सेकेंड इज मेल्ट डाउन ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स. एटॉमिक रिएक्टर्स जो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव होते हैं, कभी कभी क्या होता है, मेल्ट डाउन होने लगते हैं. सपोज वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जब उनमें कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो मेल्ट डाउन होने लगते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिव वेस्ट. सो आई थिंक टुडे द क्लास इज ओवर, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me. Okay, thank you students.